Well, it was the Azam Khan show today. Complete and utter domination with the bat. Really showing all the masterclass that we've seen from him today. That power in his hands and his ability to hit through the line and hit it clean. What a shot that was. This boy can bat, and he's definitely knocking on the doors of that selection committee. Jubilation all round from Islamabad United camp. He pretty much set up the match for Islamabad United and more importantly gained those points. A proud father in the form of Moin Khan there, perhaps on the receiving end, but he would be on a personal note very proud of that 97 in 42 balls. Yes, you're talking about strike rates. We often talk about strike rates. And Azam Khan has led the way for Islamabad United. Quetta Gladiators, well, they had absolutely no answers for that. Mohammad Hafiz, 48 in 26 balls. Sarfraz Ahmed also chipping in, but it was never going to be enough. Islamabad United won in the end by 63 runs. Welcome to Pitchside once again. What a performance by Islamabad United. It was clinical, it was clean, and it was just a joy to watch Azam Khan bat. And with me, I've got somebody who's a teammate but had an important contribution in today's match. 2 विकेटें भी उन्होंने ली. अब्रार अहमद हमें ज्वाइन करते हैं. अब्रार, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. 2 विकेटें आपने ली. तो पहले तो मैं आपकी विकेट्स के बारे में बात करूंगी. सबसे पहले तो आपने जेसन रॉय की विकेट ली. एंड इट्स ऑलवेज क्रूशल कि जब मैच इनिंग स्टार्ट हो रही होती है तो अप फ्रंट किसी बैट्समैन को आउट करना, और वो भी जेसन रॉय जैसे बैट्समैन को, तो क्या सोच के आए थे कि मैंने इसको किस तरह से आउट करना है? थैंक यू. सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शेडी भाई से मेरी यही बात हुई. शेडी भाई ने मुझे बोला आपने पावर प्ले में बॉल करना है और मुझे विकेट्स चाहिए. तो जो आप बॉल करते हुए आ रहे हो नेट पे, और जिस तरह पिछले मैच में भी मुझे पावर प्ले में ही बॉलिंग यूज़ किया था, तो यही था कि यार मैं जाके जो मेरे स्किल्स है उसको शो करूं, आउट करने पे जाऊं, और उसमें कामयाबी मिली. नहीं, स्किल्स की आपने बात की कि स्किल्स शो करूं, तो मैं उन्हीं स्किल्स के ऊपर बात कर रही हूँ. तो क्या सोचा हुआ था कि कौन सी डिलीवरी करानी है, किस तरह से इसको सेटअप करना है? ये थोड़ा सा पक्का करना पड़ता है. आप थोड़ी 1-2 बॉलें बाहर करके अंदर लाना होता है, और बस यही है कि सब चीजें बताई नहीं जाती है यहाँ पे. नहीं, ये इसीलिए तो आपको बुलाया है यहाँ पे, ताकि आप सारी चीजें बताएं हमें, अपने सारे राज जो है सारे राज खोले. सारे राज नहीं बताए जाते ना. सारे राज नहीं बताए जाते. अच्छा, 2 विकेटें आपकी अब हम दिखाएंगे भी आपको कि किस तरह से जो है आपने आउट किया जेसन रॉय. ठीक है, उनका फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेयर तो अच्छे हैं. और यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. मतलब आपने जब अपील की तो आपको पक्का था. हाँ, क्योंकि बिल्कुल ही प्लम अपील, बिल्कुल मुझे तो प्लम लगा, मगर जब उन्होंने रिव्यू लिया तो अंपायर्स कॉल था, क्योंकि मुझे अपने आउट प्लम ही लगते. हर बॉलर को अपने आउट प्लम ही लगते हैं. हाँ, तो मैंने आजम से जाके पूछा, यार आजम बल्ला तो नहीं लगा? उसने बोला बल्ला नहीं लगा है, आउट है. तो फिर मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो भाई, बल्ला नहीं लगा है तो आउट होगा. अच्छा, फेवरेट विकेट कौन सी थी, विल स्मिथ वाली या फिर जेसन रॉय वाली? ये मेरी फेवरेट विकेट तो टेस्ट थी, वो ओए क्या बेन स्टोक्स वाली. फिर यहाँ पे मैं जेसन रॉय वाली इसलिए बोलूंगा कि आपको पता है जिस तरह की विकेट थी, जेसन रॉय अगर खेलते तो वो आपको पता है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो मैं भी मैच क्लोज जाता. तो मुझे जेसन रॉय की विकेट ज्यादा अच्छी लगी. अरूज, आपको क्या चीज अब्रार की अच्छी लगती है इन द शॉर्टर फॉर्मेट? वी हैव सीन हाउ ही इज बोल्ड इन टेस्ट, बट ये एक डिफरेंट फॉर्मेट है. लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये ओपनिंग विद द न्यू बॉल, वो भी एक आर्ट होती है. टेस्ट मैचेस में भी नया बॉल कराया था अब्रार ने, और बिकॉज ये लंबी क्रिकेट खेलता हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ही इज गॉट द सॉर्ट ऑफ रेपुटेशंस, तो इसका कंट्रोल बेहतर है. और T20 क्रिकेट में फ़ायदा होता है जब आपके पास कंट्रोल हो, क्योंकि वेरिएशन तो इसके पास नेचुरली है. बॉल अंदर भी लाता है, बाहर भी ले जाता है, पेस भी वेरी करता है, बट उस सारी चीज़ों का फ़ायदा I'm sure तब होता है जब कंट्रोल हो. आपको लगता है कि आपने जितनी लंबी क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक खेलता है, उससे फ़ायदा होता है? क्योंकि आपकी शुरुआत टेस्ट क्रिकेट से हुई थी, और PSL जितना एक्सप्लोजिव फॉर्मेट है, तो आपको लगता है उससे फ़ायदा हुआ था? जी, आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान ए की सीरीज़ में गया तो
वहाँ मैंने लंबी बॉलिंग की तो मुझे मैचेस ना मिले। खैर तो उसके बाद फिर मैं आया कैरज़म ट्रॉफी के, मैंने जो 5-6 वनडे खेले उसका मैं बेस्ट बॉलर बना कैरज़म ट्रॉफी का। तो उससे मुझे टेस्ट क्रिकेट जो कैरज़म ट्रॉफी मैंने खेली ना कंटिन्यूसली, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि यार मैंने 5 मैच खेले, 5-6 मैच और बेस्ट बॉलर भी बना। और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वही बॉलिंग में टेस्ट में करता रहा, तो पिछले 4-5 महीनों से लंबी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ। It's nice to see somebody giving credit to कायदे आज़म ट्रॉफी because हम हमेशा ऑफन डिस्कस करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को क्रेडिट उस तरह से नहीं मिलता। अच्छा, टेस्ट या T20 में से ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं? अगर देखा जाए मैं केपीएल में बेस्ट बॉलर बना था T20 का, और फिर मैंने कैरज़म ट्रॉफी खेली उसका भी बेस्ट बॉलर बना, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए वाइड ये बॉल में रैपिड फायर है। नहीं इसमें एक जवाब देना है। जल्दी। T20 में मेरे नज़र में T20 के कुछ ज़्यादा ही अच्छे हूँ मुझे ऐसा लगता है। T20 अच्छा क्योंकि एक दो डिलीवरियां हैं जो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में करूंगा। कौन इंशाल्लाह। सी? ये बताई नहीं जाती। सब बताएगा नहीं आज, कुछ भी नहीं बताएगा आपको आज ये। चलें अच्छा आप मुझे ये मैं ये सईद भाई के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ होता है जैसे लेग स्पिन, गुगली, फ्लिपर वगैरह होती है, साथ में इंग स्विंग और आउट स्विंग पे भी काम कर रहा हूँ। तो इंग स्विंग तो मैंने किया, अभी आपको आउट स्विंग भी दिखेगा। और सईद भाई के साथ ऑफ स्पिन पे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं बॉल करता हूँ लाइक नारायण वो लोग भी फिंगर से करते, तो वो लोग यूं करके ऑफ स्पिन कर लेते। तो मैंने सईद भाई से बात भी की है, उन्होंने जब देखा ऑफ स्पिन मेरी अच्छी हो रही है, उन्होंने बोला ठीक है, जब तुम गुगली लेग स्पिन करते हो साथ में इस तरह ऑफ स्पिन भी फेंक सकते हो। बस जी। बता दिया आपको। सब कुछ तो बता दिया, अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये बताओ, आजम खान जैसा प्लेयर अपनी साइड पे हो, इस बात की कितनी तसल्ली है कि ये सामने से ना खेले, और अगर सामने से खेल रहा हो तो किस तरह आजम को ट्रैप करोगे? देखिए मेरी आदत है, मैं कराची में भी ऐसे क्लब से खेलता हूँ जहाँ से कोई नहीं खेलता है। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े प्लेयरों के खिलाफ खेलूँ। बाकी आजम डिस्ट्रिक्ट भी मेरे साथ खेला है, अंडर 19 भी मेरे साथ खेला है, तो वो शुरू से मेरे ही टीममेट अभी है। तक आमना सामना हुआ नहीं? नहीं हुआ है, केपीएल में हुआ है, मैंने उसको 2-3 ओवर किए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा दिए। नहीं, लेकिन नेट्स में तो होती रहती होगी हाँ ना नेट्स bowling? में होते रहते, आउट भी होते रहते, छक्के भी लगते रहते नेट्स में, तो आप चलता रहता है। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, लाइफ कितनी चेंज हुई है आफ्टर आफ्टर दैट टेस्ट परफॉर्मेंस? नहीं लाइफ तो कोई चेंज नहीं हुई है। अभी भी जाके घर के पास जाता हूँ, वहीं से जहाँ से चाय पीता हूँ अभी भी वहाँ पे जाके चाय। हाँ ये है कि उस लोगों तरह से का नहीं पूछ रही मैं। नहीं, और किस तरह लाइफ चेंज हुई? मतलब कि कितने ऑब्वियसली हर कोई आके कहता होगा सेल्फी नहीं हाँ, सेल्फी ये मैं सेल्फी यही बात सेल्फी। कर रहा था कि पहले चाय के होटल में इतना वो नहीं होता था, आजकल ये है कि लोग सेल्फी ज्यादा लेते हैं। तो लेते हैं? हाँ हाँ तो बहुत ज्यादा। सेलिब्रिटी बन गए हो? थोड़ा अब थोड़ा तो थोड़ा। चश्मों के बगैर भी मतलब। लोग अच्छी है। हाँ बताइए। देखा। तो पूरा पूरा सेलिब्रिटी कब बनोगे? अभी तुमने कहा है मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊं। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, लास्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड इज डूइंग रियली वेल एज अ साइड, अच्छा कर रहे हैं, मैचेस भी जीत रहे हैं, लगता है कि टीम आपस में बड़ी अच्छी एक यूनिट है। तो आपकी जो है इक्वेशन सबके साथ कैसी है, और दोस्ती सबसे ज्यादा किसके साथ है? आपने टीम की बात की ना, हमारे टीम मैनेजमेंट में हमारे टीम के मैनेजमेंट के साथ है, हसन भाई है, रेहान भाई है, जितने भी हमारे सईद भी, सारों ने खुला माहौल रखा हुआ है। और शेडी भाई भी यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं हर प्लेयर को, और वो बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें एफर्ट करनी है, और आपके सामने रिजल्ट। अच्छा बाकी दोस्ती मेरी हसन अली के साथ ज़्यादा है थोड़ी। उसकी सबके साथ सबके साथ दोस्ती। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? क्योंकि इस्लामाबाद का काफी है कि कंडीशंस और डेटा को देख के वो 11 सेलेक्ट करते हैं, तो किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो और रेडी रखते हो कि जैसी गेम मिले मैं परफॉर्म करूं? अगर देखा जाए ना, मैंने पिछला मैच खेला जिसमें मैंने पावर प्ले में बॉलिंग की, 4 ओवर में मैंने 20 रन दिए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बोले कि यानी हमें टीम बनानी पड़ती है, आप इस बात को बुरा ना मानना कि हम अगले मैच में मैं बाहर था, मगर मुझे खुशी भी होती है कि अगर आप टीम में हो तो आपको ऐसे चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। बाकी मैं क्रेडिट देता हूँ टीम मैनेजमेंट को, बहुत अच्छी टीम है। चलें, थैंक यू सो मच अबरार, आपके वक्त का आपने टाइम निकाला
और आपने अपने सारे जो हैं राज यहाँ खोल दिए हैं और ये भी बता दिया कि आप सईद अजमल के साथ काम कर रहे हैं कॉल डिलीवरी पे. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. व्हाट यू हैव, what weapon do you have next that you're going to unleash? Out swing है या in swing है वो तो देखना पड़ेगा. But yeah, on that note, we're going to take a short break, and when we do come back, we'll look into the match on a much deeper level. Back on pitch side, and what a show today by Islamabad United. In fact, the Azam Khan show, that's what I'd like to call it. He dominated the bowlers and really put out an entertainment, spectacle of entertainment for all the fans and everybody who's watching. I've been joined by Bazid Khan. Baz, first innings के बाद क्या कहेंगे, मैच खत्म हो गया था? खत्म खत्म हो गया. जो आखिरी 5 ओवर खेल रही हैं सबके साथ. आखिरी 5 ओवर जो वो खेला है, मतलब उसके बाद देयर वाज नो कमिंग बैक. और ऐसे समटाइम्स जब वो यू सी अ बैट्समैन और प्लेयर कम इन एंड वंस ही स्टार्ट्स बैटिंग, sometimes you think that he's in the zone, you can spot that he was in the zone straight away. आज जब उसने शुरू किया, he was very calm, very collected और बड़े सुकून से खेल रहा था. और लगे ऐसे रहता है, एक इसने इनिंग्स पिछले सीजन भी खेली थी, वो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया था, बट इट वाज वेरी सिमिलर. ही केम इन, ही वाज वेरी काम, वेरी कलेक्टेड एंड ही न्यू कि आज मेरा दिन है. ही वाज इन दैट जोन. ये प्लेयर का एक जोन होता है, ही वाज इन दैट जोन. एंड वंस ही हिट्स इट, आई थिंक he probably is the most destructive T20 batter that Pakistan is. Now the debate again, वही debate जो हम उस दिन कर रहे थे, fitness versus playing ability. Playing ability इस वक्त T20 क्रिकेट में against all bowling, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फास्ट bowling, स्पिनर्स और फास्ट bowlers को दोनों वो इतना डिस्ट्रक्टिव है. और आज इस तरह की इनिंग्स खेला है, आई डोंट थिंक के many Pakistani players can play in the way that he played today. And it'll be tough for the selectors to ignore him completely either, based on all the discussions that we've had, considering जिस तरह की उन्होंने shots खेली हैं आज. और क्योंकि आज हम उन्हीं की बात करें तो उन्हीं की innings की जो है highlights देखते हैं through Master Blaster of the Day. Like you said before, it was an Azam Khan show. It was a one-man show, and it was an innings of class, composure, command, and it was absolutely destructive. 97 from 42. He dismantled the opposition completely. बाजिद, ये आखिरी शॉट क्या थी शॉट, जरा व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें. देखिए, हम जब खेलते थे ना, मैं प्लेड लॉट विद हिज फादर. जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ना, तो उनकी स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्पिन एक्स्ट्रा कवर और अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग स्वीप, और स्पिनर्स को भी स्वीप मारते थे, लेकिन जो पावर उनके पास था ना, शायद इनके बेटे के पास ज्यादा पावर है. It is brute strength really. That is all forearm, wrist hai, forearm hai, but to get a ball from outside off stump into the stands, yes, timing आप कह लो, लेकिन जो strength that he has in his forearms and in his shoulders, it is quite amazing. This shot, and there's one other shot which personally मतलब मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो जो इसने extra cover पे एक छक्का मारा है. मतलब थोड़ा सा नीचे उतरा है, हम जो कहते हैं ना एरोगेंस, उसने एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा और अभी बॉल बल्ले पे लगा ही है, तो देन ही लुक्ड अवे बिकॉज़ ही न्यू कि इससे बेहतर नहीं हो सकता. ये कॉन्फिडेंस फिर हो तो फिर ऐसा. और बताओ अरूज कि तुम्हारी फेवरेट शॉट कौन सी थी, बिकॉज ऑनेस्टली इट वाज लाइक मास्टर क्लास, लाइक आई सेड, बैटिंग ऑल अराउंड द ग्राउंड, एंड इतनी शॉट्स थी कि यू कैन चूज. And you've got a variety to choose from, which is very good to all of the shots. Like Baz is saying, over the extra cover. But for me, it was that flick of the wrist, his brute strength, that traveled, I'm guessing, up over National Bank Stadium and onto the road somewhere. And somebody's got a very sort of a gift
gifted to them from Azam Khan. But again, I spoke to him at the post match, and मैंने उनसे पूछा कि because he comes across as a very confident guy who's very assured of himself and in his ability. और उनसे आपसे बात करते भी उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मैं गेम को चेंज कर सकता हूँ. So I asked him if this is nature or is this practice or is this an amalgamation, and credit he gave to his father who's developed that mindset in him to be aggressive and alongside worked on his skill, which is a wonderful combination to have. And you said it earlier that he's knocking on the selector's door. I think he's kicked it open. He's kicked it open and he's kicked the records open as well. Let's have a look at the stat attack. Most sixes in an innings in the history of HBL PSL. अब आप देख लें कि 8 साल हो गए हैं HBL PSL के, and he is now right on top with 18 sixes. This Islamabad United. Islamabad United right on top, 18 sixes against Quetta Gladiators. जिसमें से मेरा ख्याल है शायद 17 तो शायद उसी ने मारे होंगे. But yeah, I mean, he hit 9 sixes today, Azam Khan, and that's one of the things that we're talking about कि पाकिस्तान के पास जब नेशनल साइड के ऊपर भी डिस्कशन होती है, बाज़त आपके पास मैं आ जाती हूँ, वो हमेशा ये होती है कि जी पावर हिटर है नहीं है, फिनिशर नहीं है, और एक ऐसा we don't have somebody who can clear the ropes, who can hit मेलबर्न में छक्का ना मार सके. आजम खान मार सकता है. अब बिल्कुल, लेकिन ये और हमारे लिए हमारा जो पाकिस्तानी माइंडसेट है, दे वांट कि छक्के तो मारे लेकिन कंसिस्टेंट भी हो. आजम खान वो सारे बॉक्स टिक कर सकता है बिकॉज ही कैन गिव हिमसेल्फ टाइम, ही कैन मेक श्योर दैट ही बिल्ड्स इन इनिंग्स एंड ही कैन आल्सो क्लियर द रोप्स व्हेन ही वांट्स टू. जो he was so good that we're not talking about Asif Ali. Asif Ali played really well, and अगर आप देखें Asif Ali is I think Islamabad का top scorer है, as in most runs for Islamabad, and the batting the way that he does as a finisher, as a power hitter, तो उसका रोल भी वो जब 2-3 दफा फेल होता है तो हम कहते हैं कि यार हमें आसिफ अली नहीं चाहिए. तो पावर हिटर डेवलप, आउट एंड आउट पावर हिटर डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है. यू हैव टू गिव देम अ वेरी लॉन्ग लीश because it's high risk cricket. Every time they go out there, it's every time they're taking high risk, so you have to give them a very long leash. Azam Khan इसलिए पाकिस्तानी mindset में पूरा उतरता है because he's going to give himself time, so he will be slightly more consistent. तो फिर जब वो बात आएगी यार ये तो runs नहीं कर रहा, runs कर रहा है लेकिन power भी है, तो that both boxes he takes. The only box he doesn't take is the box that everyone will then talk about कि भाई ये fielding नहीं होती, fit नहीं होता. That box that now you have to decide, do you want an actual match winner or do you say no, we take a stand on fitness and we compromise, or we take out a player who can win you a game on your own. ये बात मैं आज नहीं कर रहा, ये मैं 2 साल पहले भी यही बात कर रहा था जब शर्जील और आजम खान बहुत फॉर्म में थे कि ये 2 प्लेयर हैं आपके जो पाकिस्तान टीम को ऑन देयर ओन बैट मैच जिता सकते हैं. बट इफ यू गोइंग टू थिंक फिटनेस देन दे डोंट फिट इन. ठीक है. आई मीन एटलीस्ट वन थिंग ही डन इज कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोस्ट अमाउंट ऑफ सिक्सेस आप लोगों को नजर आ गए होंगे इन द लास्ट 2 years courtesy आजम खान, क्योंकि उसने आज इतने बड़े बड़े छक्के मारे हैं. एंड या दैट वाज द स्टार अटैक फॉर यू. Right, it's time to have a look at the player of the match, and no surprises, that's also Azam Khan. शुरू में ये ऑस्टम से बाहर अपने आप को रूम दे रहे थे just to hit through the offside. Then once he got to the fast bowlers, then it was extra cover, straight down the ground, and the offside, leg side didn't matter. Any glaring weakness, Aruj? Because often we talk about players and we say कि अच्छा इसकी offside game strong है, इसकी leg side game strong है, या एक कोई area है weakness का, तो इनकी game, let's leave aside his fitness, let's talk about what he brings to the table.
I think looking at the way he's played tonight, and probably in the recent past, and a couple of franchises that he's played, like Bazit saying, when he's on song, when he's in his zone, he looks like the ultimate finisher in the T20 version. If you break it down, there could be attributes that maybe when the ball's turning a lot, when the ball's gripping in the surface, where does it offside game come in? Because he's very good to drag stuff from the offside into the leg side and off his legs and straight and cover, but maybe just behind point. But again, it comes to the discussion, you don't have to be 100% all around the ground. When he's got, you could probably safely say, more than 75% of the area covered, and he's destructive, and if he can strike at 230, it just becomes a question of, is he actually weak? Does he need to? And I'm sure bowlers have tried. The amount of data available, the amount of video footage available, it's all been tried and tested. But if he still comes out on top in the fashion that he does, and with so much command, that is what is such a wonderful attribute to him. He looked unfazed. He came out, he took the game on. He mentioned at post-match they were 71 odd for 4 to end up at 220. Wow. I mean, yeah. Bazit, let's not forget कि ये उन्होंने जो performance दी है, it's not against an average bowling attack. It was up against Naseem Shah and Hasnain, you know, who are quality bowlers, जिनके खिलाफ बहुत से batsmen जो हैं वो struggle करें. But अगर आप इनकी opportunities देखें for the national side, 2 दफा I think England के tour में खेले थे, फिर एक West Indies tour में, तो he's not exactly had a consistent run, has he? No, not at all. But again, every selection panel or every cricket board will have that same discussion, and once you draw that line, then he's not going to get in. Usi ka, once he gets into the Pakistan side, if he doesn't score, if he doesn't get runs, then that discussion will come through all over again. The other great thing that United have done is that they've actually paid him as a wicket-keeper batsman. I think that is the best role for him. He's not bad behind the stumps. You don't see a lot of glaring errors from him behind the stumps. He's quite agile. I think fielding he does get found out because you have to run, you have to chase down boundaries and make sure that throughout those 20 overs your energy levels are, you're always under the pump. Lekin keeping I think that has helped him. That has helped him, give him a role that he's comfortable with. And I think with him keeping and batting, that brings out the best in him. Right, we're talking about Azam Khan, but उनका साथ बहुत अच्छा दिया था आसिफ अली ने, and that partnership was key today in them making over 200 runs, which is also the reason why it's the switched on moment of the day. Gee, Arooj, 98 of 45 balls. Yeah, no matter how short the game, I say this all the time, partnerships are extremely important, and he was able along nicely, Azam Khan and Asif Ali. And it was this partnership which kept the impetus on, because had it not been all guns blazing on the other side, they would have probably been 20 odd short. So you have to give credit where it's due for Asif Ali as well. All right, thank you so much, Arooj, for joining us on the late night show. That's what I call it. It is the late night show, but आज हमें Azam Khan ने सबको जगा के रखा है. So good on him. He's been very entertaining for everyone, especially आज जो crowd आया हुआ था कराची का. They really enjoyed his sixes. We also enjoyed it. On that note, we'll take a break and we'll be back just in a bit with the new guest. Back on the pitch side show, and we've now been joined by Vern Bhai. Vern Bhai, बहुत बहुत मुबारक हो. The women's team, South Africa's women's team, has made it to the finals. They've created history in the T20 World Cup. Shukran, Zainab. And I think there's one team in green that will be obviously representing all of us here this evening. So yeah, very chuffed for the ladies, and yeah, I think they've had a magnificent tournament after that first game to come back to get into the finals. Hopefully they can win the final this time around. Yeah, brilliant achievement by them. But we're also talking about the heroics of Azam Khan here today. I mean, what a knock, what an innings.
Absolutely brilliant. I always talk about the T20 format affording individualism, individual performances to really take the game away. And I tell you what, you would not want to be a bowler out there this evening. I mean, he was striking it clean. And the thing that impressed me obviously most about that innings was it was a mature innings. There was proper cricket shots being played. I think Buzzer keep talking about him hitting the ball over cover. Wow, I tell you what, he was in some form this evening. And again, like I said, the bowlers kept fetching. Some of them might have some neck ache in the morning. Obviously kept watching the ball disappearing at the ground, but fantastic. I mean, fantastic to have a bird's eye view of it as well, to be up in a comp box. I tell you what, those innings, they don't come around often, but it was an absolute brilliant innings from him this evening. Let's talk about Vernon's school of bowling then. I mean, how would you be bowling to somebody like Azam Khan? Well, I think the form that he found himself in, you probably have to be a little bit more proactive. I suppose you probably wanted to bowl the bouncer, obviously, you know, above shoulder height, obviously asking him to hit it up. And also, I think once a batsman is in like that, he wants pace on the ball. I think he's really enjoyed the ball coming onto the bat. So you perhaps wanted to take pace off, but also drag him a touch wider. I think anything in his arc this evening was travelling out the park. So those are the two options that bowlers could perhaps look at it. But I tell you what, it's a lot easier looking at it in hindsight and obviously from our position. Yeah, it's easier said than done always, especially when you have somebody like that in prolific form like Azam Khan is. I mean, he himself admitted that he's eyeing the ball like a football. Anyway, Quetta Gladiators was not up to the mark once again today. Their batting fell short, as we've seen in the last few games as well. Let's have a look at the fall of wickets. He started off with an absolute beauty. Gappu nodded his head and walked off. Then it was a Roy didn't pick him. The LBW DRS ruled in favour, and then Smith took early on that shot. That was a good catch. It went quick, it went flat, Mubasir with the catch. And at this stage it was Islamabad United in the front seat, and Quetta just had to play a shorter ball. This was another really good catch. It was very much diving away to a flat one. Then the slow one worked for Hassan Ali. And again, a very good catch is for Rassi van der Dusen. It hung in the air for quite a while. The full toss went straight to Shadab. Catching was really good from United. The slow one onto the stumps. And then the bouncer knocked back cotton ball, and that was that. Well, although pace didn't really trouble Azam Khan much today and he was pretty much hitting it all around the park, we do have the fastest delivery of the day for you. Yeah, absolutely no surprise. He's got a beautiful rhythm, Nasim Shah, and then of course when he releases them, the high 140s, all in the red marks there. Tell you what, Azam Khan really enjoyed the ball coming onto the bat. Right, we've seen some good catches being taken in the HPL PSL, some easy ones being dropped, but I think we've had some good ones today. Let's have a look at safe hands. This was a really good one. It's a car running back. Once you run back, it's an extremely difficult catch. He made sure he kept his eyes on the ball and was very balanced at the end as he clung on. This is good fieldsmanship from Iftikhar. And this Fahim Ashraf diving away, it went flat, it went quickly. And this is a really good catch. As you can see, it was hit well, and once you're on the boundary and comes flat, it's always very difficult to judge. Fahim did it brilliantly. Well, the smile on Shadab Khan's face tells you a story. Islamabad United is doing well, and why not? What a performance by them. We're taking another breather, and we'll catch you just in a bit.
Well, I'll tell you what, the fans were in for a treat today with the way Azam Khan batted. It was an absolutely blistering knock by him, and I'm sure they really enjoyed it. Let's hear their thoughts now on the ringside view. मैं शुरू से ही इस्लामाबाद का फ़ैन हूँ, तो आई वाज सपोर्टिंग इस्लामाबाद टुडे. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हाउ आज़म खान प्लेड टुडे. आज का उनका जो परफॉर्मेंस थी, आई मीन ही मेड 97. मैं एज अ फ़ैन मैं ये चाह रहा था कि उनकी 100 हो जाए, बट बहुत मज़ा आया. इट वाज ग्रेट टू सी हाउ ही प्लेड टुडे. टूर्नामेंट के स्टार्ट में तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और मैं शुरू से क्वेटा का फ़ैन था और टीम भी ऑब्वियसली अच्छी है, लेकिन यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है इनका, क्योंकि खेलने वाले सिर्फ 2-3 प्लेयर ही हैं और ऑब्वियसली T20 आपको जीतने के लिए 7 to 8 पीपल्स का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है जीतने के लिए. मैं बेसिकली PSL को सपोर्ट कर रहा हूँ. सब टीम्स हमारी हैं, पूरा पाकिस्तान खेल रहा है, फॉरेनर्स खेल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं PSL को सपोर्ट कर रहा हूँ. आज़म खान के बारे में कि सब लोग कहते हैं ओवरवेटेड है, चीज़ें हैं, लेकिन आप ये चीज़ें चेक करें कि उसका स्ट्राइक रेट कैसा है और हमें पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है और काफ़ी लोग उसके ऊपर बातें करते हैं. वो प्रूव कर रहा है. हफीज़ ने भी आज परफॉर्म अच्छा किया है और बस सैफी भाई नहीं चल सके, उनको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर टीम को आगे लेकर जाना है. नो डाउट आसिफ अली अच्छा है, मगर 2 छक्कों में हम लोग जो है नहीं रह सकते. हमें चाहिए 7-8 छक्के जो आज़म खान मार सकता है. तो मेरे लिहाज से आज़म खान बेस्ट ऑप्शन है. आपने देखा है कि उसने आज आउट क्लास कर दिया. 5 ओवर के अंदर 98 रन, जो लास्ट 5 ओवर के अंदर 98 रन है, और नॉर्मल बॉलर्स को नहीं मारा उसने. मेरे ख्याल से उसने नसीम को मारा है जो इंटरनेशनल लेवल पे, हसनैन को मारा है, और जो स्मिथ आया हुआ था वेस्ट इंडीज़ से वो भी जो है पिक है, तो उसने अच्छे बॉलर्स को मारा है, लोकल बॉलर को नहीं मारा. चलें, ये तो होगी एक्सपर्टीज हमारे फैंस की, बट आइए देखते हैं कुछ मसालेदार मोमेंट्स. अच्छा जी, मसालेदार मोमेंट्स थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं. बाज़ फैंस जो हैं आज आज़म खान को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आई एम अमेज्ड कि हमारी ऑडियंस कितनी स्मार्ट हो गई है. लाइक दे एक्चुअली एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ प्लेयर. जाहिर है अगर आप इतने लंबे लंबे शोज करेंगी तो फैंस भी तो देख ही लेंगे. All right, I think we are ready now for the masaledar moments. A bit of banter. नसीम शाह जहाँ हो वहाँ पे हसनैन हो, नसीम शाह हो, 2 फास्ट बॉलर्स हो, तो वहाँ पे बैंटर तो ज़रूर होता है. वैसे भी ये आपस में खेलते हैं. दे ऑल प्ले इन द सेम टीम, सो इट्स ऑलवेज नाइस टू सी दैट. शादाब खान की शक्ल पे एक स्माइल भी आई है. यहाँ पे ये नसीम शाह ने थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है और गुस्सा दिखाया है. ही डजंट लाइक, इट्स नॉट मेनी डेज दैट यू सी के ही विल गेट हिट ऑल अराउंड द पार्क. All right, thank you so much, gentlemen. It's the last goodbye of the night, but we have 2 more games coming up on Sunday. That is what we're all looking forward to, the Super Sunday, which is what we talk about. Pehle Karachi Kings versus Multan Sultans, and that's the first game. That's a day game. Remember, it's at 2 p.m. And the next one is at 7 p.m. and that's Lahore Qalandars taking on Peshawar Zalmi. Right, fantastic game today. Thanks to Azam Khan. We were all extremely entertained and we'll be seeing you on Sunday, but leaving you with some super moons. रौनक लगे सबका ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे हर घर में है क्रिकेट. बिक गई है टिकटें, रेडियो पर लिसन, टीवी पे करें हम मैचों को व्यू. सकता है मुकाबला, better be bringing the best of ये crew. Best of 11, जैसे ये blessing from heaven. अब उठेगा गेम होगा लेवल. ये है athletic endeavor, ये crowd है hysterical, trophy historical. हम सब सितारों के नाम इसमें लिखे forever and ever. ये magical. Abracadabra, विकेटें भी गिरेंगी, स्लिप में जो निकली ये spinning.